Hello everyone. So today is day 21st day of the challenge, and as I do a weekly recap video, not a recap. I am missing the word. So I do a weekly test where I share all the mistake. I share all the insights I have been feeling. I have felt all the week on I have shared my first recap realization video on day 7th, second on day 14, and today is day third. Today is the third 21st day. So today I am going to say do the same thing. So the recording myself for the from I am recording myself from the last 21 days straight without taking a break or without taking a single day break. I have taken I was in these 21 days only. I have missed 2 days, but I have recorded and posted a video for to बस मैंने 2 दिन ही स्किप किया और नहीं स्किप नहीं बोला जा सकता है उसे मैंने 2 दिन रात को नखरा कर दिए थे जी और अगले दिन सुबह उठ को मैंने रिकॉर्ड किया और उसके डाला। So I have been recording from 21 days, and I am in this video I am going to share all my mistakes I have realized and all the improvements I am seeing in myself in this video. Starting from the mistakes the mistakes I have realized. One thing is that my I need to work upon on grammar. one of I need to work upon my grammar, and I have already started working on it. I have taken a grammar book, and where whenever I see a mistake in tense or in verb or anything, I I choose that topic from I मैं उस टॉपिक को किताब में खोलता हूँ और आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स गिवन इन दैट बुक. So as you can also seeing that I I have a little bit issue of मुझे अभी फिलहाल अभी कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिसे मैं सोचने लगता हूँ कि मैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलूँ. And that so as you can see me right now, I was stuck, and I was just seeing here and there and thinking what to speak. The second thing I have realized is that I need to work upon my vocabulary vocabulary पर मुझे अपने vocabulary पर वर्क करने की ज़रूरत है, and both thing will automatically change change as as और वो दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा करता जाऊंगा. और जैसे जैसे मैं छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ूंगा और उन्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी. So these are the two things I found in myself. I found missing in myself. The third one is that the third one is that I need to prepare a topic before
recording myself, or I have to only talk about those topics about which I know a little bit or which I know in depth, और जिस टॉपिक के बारे में मुझे मालूम नहीं है वो तो ऑटोमेटिक है। अगर मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो ऑटोमेटिक है। मैं 2 लाइन 3 लाइन मैं 2 लाइन 3 लाइन बोलूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक है कि मैं उस पे स्टक हो ही जाऊँगा। सो इट मेरे लिए यही बेटर है कि मैं उसी टॉपिक के बारे में बोलूँ जो मुझे अच्छा से पता है, या फिर मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बड़ा-बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ। So these are the mistakes I have realized this week, and now now I am going to share all the little improvements I am realizing right now. So as जैसे जैसे मैं अपना रिकॉर्डिंग जो लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या किस चीज़ की कमी है, मुझे क्या दूर करना होगा। और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। और सेकंड थिंग आई हैव रियलाइज लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट दैट I have a lot of problem to of clarity. I can't. There are lots of word which I can't not, which I am not able to pronounce clearly. So I need to work upon that. और मुझे अगर मैंने इससे स्टार्ट नहीं किया होता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मुझ में ये कमी है। मुझे हरदम ये लगता कि हाँ आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। सो दीज आर द टू थिंग्स आई हैव रियलाइज्ड, that in factly in fact these are not the things which I have realized I have improved upon, but these are the things, these two things also come under the mistakes. The third thing is that after recording and after writing after I have started working on my communication, I can easily write one page on anything. Basically I have my mind have started connecting dots slowly. So this was the 21 of this challenge. See you tomorrow, and tomorrow I will start talking about freelancing and marketing. So as you have noticed that my my grammar is weak. The first line after the a few lines ago is not suitable word. As you have noticed, when I was saying that from tomorrow I will be starting, and I will be starting is the correct line, but I have said that from tomorrow I will starting. It is wrong sentence. So it was day 21. See you tomorrow. Good night.